Yes, sir. Okay. So it's section 7.10 and it's related to Galois theory of equations. All right. So let's say you have a separable polynomial. Be a separable polynomial over a field K. And assume E be the minimal splitting field of fx over K. So if alpha 1, alpha 2, alpha n, these are all the roots of fx in E, then because E is the minimal splitting field, so E will be K alpha 1, alpha 2, alpha n, right? And E over K, it's a Galoi extension because it's normal and separable. Normal because minimal splitting field, separable because minimal splitting field of a separable polynomial. So then E over K is a Galoi extension. So assume G with a Galois group. Galois group of E over K. And let's call the root set to be S. S be the root set. Oh, sorry, alpha 1, alpha 2, alpha n. All right. So suppose sigma is any automorphism in G. Let's say sigma be in G. That means sigma is K automorphism on E, right? So that means sigma is a K automorphism. That means automorphism on E fixing the elements of K. So it's a K automorphism and fx is a polynomial over K. So any K automorphism will map root to a root. Root of a polynomial over K to a root, right? So as f alpha I is 0, we have sigma f of alpha I this is same as sigma 0, which is 0 on the other side because coefficients of f are coming from K. So when you apply this sigma to and sigma is a field automorphism, so preserves addition, preserves multiplication. So basically this will be f of sigma alpha I. We have already seen how it is. All right. So that means sigma alpha I is a root of fx. So sigma alpha I belongs to
S. तो अल्फा आई अगर S में है तो सिग्मा अल्फा आई इमेज भी S में ही है उसकी, राइट. So if you consider, let's say what you want to call sigma star, restriction of sigma on the root set S. So because if alpha I is in S, तो sigma alpha I भी S में है. So the point is sigma star is a map from S to S. Is a function. Is that fine? And because you have sigma is a 1-1 map, right? So sigma star is a restriction of a 1-1 map is 1-1 map. So sigma star is a 1-1 map from a finite set to itself. It must be onto. So as sigma is 1-1, sigma star is also 1-1. So this would mean sigma star is onto also. For being a 1-1 map, on a finite set to itself. तो that means sigma star कहाँ चला गया? Sigma star belongs to the permutation group on the elements of S. This is precisely symmetric group of permutations on S. Is that fine? S के एलिमेंट्स पे परम्यूटेशन ही मिला आपको, ठीक है. Yes, sir. तो now let me pose the question in the reverse. So basically what we have done, we started with a automorphism, key automorphism on E. So basically I mean rider क्या है कि वो Galoi extension है, right? So that's fine. So we started with a key automorphism on E, and then we have obtained a permutation on the root set. Is that fine? Let me repeat. We started with a polynomial, separable polynomial. Then we considered its minimal splitting field, which will be the Galoi extension over the base field. So we started with a k automorphism on E, and with that automorphism we have obtained a permutation on the root set. So for every permutation, for every k automorphism on E, you will get a permutation on S. Is that fine? Now let me pose the question in the reverse direction. Suppose you have a permutation on S. Do you have a automorphism? K automorphism. So the point is, conversely, suppose that sigma is any permutation. ठीक है? So that is, let's say sigma alpha I
जाता है मे बी अल्फा, इसको बोल देते हैं कुछ J1 J2 Ji, ठीक है, फॉर ऑल आई. So that means sigma alpha 1, alpha J1, sigma alpha 2, alpha J2, sigma alpha n, alpha Jn. So you may argue, or what you do, you may define a map, let's say tau, from E to E. And recall, what is E? Recall, what is E? E is precisely this. Field obtained by adjoining alpha 1, alpha 2, alpha n over K. So E is what? K alpha 1, alpha 2, alpha n. तो यू में आर्ग्यू के टाउ अल्फा आई को ऐसे डिफाइन कर देते हैं जैसे सिग्मा है, सिग्मा अल्फा आई विच इज अल्फा जे आई, और बाकी फिर जो है के एलिमेंट्स को फिक्स कर दें. टाउ ऑफ ए इज ए फॉर ऑल ए इन के. तो यू में आर्ग्यू कि भाई ये टाउ तो फिर ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा ई से ई में. इज दैट फाइन? कैन यू सी समथिंग रॉन्ग इन दिस? कैन यू सी समथिंग रॉन्ग? देखो, आई मीन आपके पास एक आर्बिट्ररी परमुटेशन है सिग्मा ऑन द रूट सेट. विद दैट परमुटेशन we define this map E to E, जो रूट सेट को परमुटेशन which sends roots to image as per the permutation and then fixing the elements. Will it be a K automorphism on E? So the point is कि I mean it may be a field automorphism, but will it always? That's the question. क्योंकि अगर हमेशा हो जाएगा तब तो फिर 1-to-1 का करस्पॉन्डेंस आ गया आपके पास बिटवीन द परमुटेशन ग्रुप ऑन द रूट सेट एंड द ऑटोमॉर्फिज्म और एंड द गलवा ग्रुप ऑफ E over K. इज दैट फाइन? तो इस परमुटेशन के रेस्पेक्ट में हमेशा ये आपको जरूरी नहीं है कि ये टाउ फील्ड होमॉर्फिज्म हो. इज दैट फाइन? तो कैन यू सी, कैन यू ऑब्जर्व व्हाई इट मे नॉट बी ए फील्ड ऑटोमॉर्फिज्म? मैं अगर ऐसे डिफाइन करूं कि टाउ अल्फा आई जाता है अल्फा जे पे, अल्फा जे आई पे, तो और इट फिक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ के, तो ऑन टू मैप तो हो ही जाता है बिकॉज जनरेटिंग सेट के एलिमेंट्स को जनरेटिंग सेट पे ही भेज रहा हूं मैं. सो इट विल बी ऑन टू मैप. इट विल फिक्स द के एलिमेंट्स ऑफ के, तो के होम भी हो जाएगा. इज इट ए फील्ड होमोमॉर्फिज्म? विल इट प्रिजर्व द ऑपरेशंस? जरूरी नहीं है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? जरूरी नहीं है कि टाउ फील्ड ऑपरेशंस को प्रिजर्व करे बिकॉज द पॉइंट इज गो बैक. अल्फा 1, व्हाट आर द अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n? दे आर द रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल fx, राइट? अगर ये अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते तो फिर आपका वो आर्ग्यूमेंट करेक्ट है, ये फील्ड होमोमॉर्फिज्म हो जाता है यहाँ पे टाउ की ऑटोमॉर्फिज्म भी हो जाता. बट अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n
related to each other through via several algebraic relations. Is that fine? जैसे summation alpha I है तो it will be the minus of coefficient of xn minus 1 and so on. Is that right? ठीक है, ऐसे ही summation alpha I alpha j है तो कोई भी ऑटोमॉर्फिज्म आप डिफाइन करने जाओगे तो वो बिकॉज दैट हैज टू प्रिजर्व एडिशन मल्टीप्लिकेशन, तो वो इन रिलेशंस को भी उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा, राइट? कोई भी ऑटोमॉर्फिज्म है उसको दैट हैज टू रेस्पेक्ट दीज रिलेशंस, दीज all these relations, all these algebraic relations which are among the roots, right? So I mean the point is probably, I mean the point, let's say, I mean you have maybe, I mean alpha 1 alpha 2 alpha 3, right? Suppose these are the roots. So what may happen among the roots के alpha 1 alpha 2 product चाहता हो आपका 3 पे, I mean product this alpha 1 alpha 2 may be equal to alpha 3, right? तो अगर कोई automorphism है तो that has to respect this relation. Sigma alpha 1 alpha 2, this should be sigma alpha 3. That means sigma alpha 1 into sigma alpha 2, this should be alpha 3, sigma alpha 3, that has to respect this, right? So but permutation तो arbitrary है because we started with the permutation first, right? Conversely, suppose sigma is a permutation, तो जब आप परम्यूटेशन देखने जा रहे हो सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n पे, तो वो अल्फा 1 किसी भी एलिमेंट पे जा सकता है, वो दैट आई मीन जब आप परम्यूटेशन के लिए देख रहे हो तो आई मीन यू आर नॉट लुकिंग एनी अलजेब्राइक रिलेशन, राइट? परम्यूटेशन पे तो कोई बाउंड ही नहीं है कोई. इज दैट फाइन? तो दैट मीन्स कि लेट्स से कि कोई परम्यूटेशन है आपका अल्फा 1 में भी इक्वल टू, सपोज अल्फा 1 जाता है आपका परम्यूटेशन, ओनली थिंग इट्स ए परम्यूटेशन, राइट? तो अल्फा 1 में भी जाता है अल्फा 3 पे, अल्फा 2 में भी लेट्स से अल्फा 2 पे ही रहता है, तो अल्फा 3 अल्फा 1 पे आएगा, राइट? तो सपोज दिस इज द परम्यूटेशन, तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो अल्फा 1 is alpha 3, alpha 2 is alpha 2, alpha 3 is alpha 1, right? तो जरूरी नहीं है कि रूट्स के बीच में ये रिलेशन हो. अगर रूट्स के बीच में ये रिलेशन नहीं है तो फिर आपको इस परम्यूटेशन के रेस्पेक्ट में फील्ड ऑटोमॉर्फिज्म नहीं मिलेगी. इज दैट फाइन? Are you getting? Suppose you have a degree 3 polynomial alpha 1 alpha 2 alpha 3, right? और उसके रूट्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डिग्री 3 पॉलिनोमियल के, और सपोज के रूट्स के बीच में ये रिलेशन है, तो कोई भी ऑटोमॉर्फिज्म होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. अगर कोई ऑटोमॉर्फिज्म है तो वो दैट हैज टू सेटिस्फाई दिस रिलेशन. लेकिन इसका परम्यूटेशन कंसीडर करो, ये दिस परम्यूटेशन अल्फा 1 जाता है अल्फा 3 पे, अल्फा 2 पे रहता है, अल्फा 3 अल्फा 1 पे रहता है. तो इफ यू डिफाइन ए ऑटोमॉर्फिज्म with the help of this permutation, that means कि अल्फा 1 अल्फा 3 पे जाए, अल्फा 2 पे, अल्फा 3 अल्फा 1 पे जाए, राइट? तो इस परम्यूटेशन से जो आप मैप डिफाइन करोगे कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 पे, that has to satisfy this relation alpha 3 alpha 2 must be alpha 1. तो अगर आपके पास ऐसा रूट सेट है जिसमें ये रिलेशन है और ये रिलेशन होल्ड नहीं करता है,
तो ये परम्यूटेशन आपको इस परम्यूटेशन के रेस्पेक्ट में कोई ऑटोमॉर्फिज्म नहीं मिलेगा. सो द पॉइंट इज कि कन्वर्स जरूरी नहीं है कि it may not be it may not always that every permutation will give you an automorphism. I hope you got the point. किसी को कुछ कंफ्यूजन है इसमें? So tau may not be a field home on E. Is that fine? Yes, sir. Okay. So that means ये map consider करें from the Galwa group to permutation group, because for every k automorphism you are getting a permutation, right? तो गलवा ग्रुप से परमिटेशन ग्रुप में मैप कंसीडर करते हैं, राइट? तो मैप ये ऑन टू तो जरूरी नहीं है, बिकॉज नॉट एवरी परमिटेशन विल गिव यू ए फील्ड ऑटोमॉर्फिज्म. तो मैप मे नॉट बी ऑन टू, बट यस इट इज वन वन. सो डिफाइन what you want to call phi from G, which is the Galwa group of E over K to SNS, where ये E वही पूरा ऊपर से सेटअप चला आ रहा है. E is the minimal splitting field of a separable polynomial fx. polynomial के रूट्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, और S is the root set. So define phi by phi of sigma will simply sigma star. Sigma star as defined earlier, it is simply the restriction of sigma on the root set. So as we have seen, this sigma star is a sigma star is a permutation on S. So phi is a it's a function from G to SNS, and it's a group home. It can be verified easily because phi just restricting the map, it doesn't do anything else. So then phi is a group home. You can write, sorry, group home. You can write the argument for this. It preserves the group operation. Group operation दोनों जगह क्या है? Composition ही है. Now phi is 1 1. It's quite trivial. Let's say sigma belongs to G. G क्या है? Galwa group of E over K. Be such that phi sigma, which is sigma star, which is the identity. तो ये identity कहाँ है? Identity permutation on the roots, SNS में. Identity permutation, that means sigma का जो restriction है root set पे, that is the identity map on the root set. So means what? This simply means sigma alpha I exactly equals to alpha I for all I equals 1 to n. And the point is sigma आ कहाँ से रहा है? K automorphism है E में. So that means sigma is already fixing the elements of K. Sigma is A for all A in K, और अल्फा आई को भी उसने वो फिक्स कर रहा है, तो पूरा का पूरा ई फिक्स कर देगा. सिग्मा ऑफ x equals x for all x in E, which is k alpha 1 alpha 2 alpha n, right? So that means sigma is identity map on E. So which is the
identity element in G. So means what? SNS. Remember, I'm repeating. We started with a polynomial, separable polynomial. S is the root set. So SNS is the permutation group on the roots. So this permutation group contains an isomorphic copy of the Galois group G. Contains an isomorphic copy of Galois group of fx over k. Is this all right? Yes. तो रिमेम्बर अभी आपके पास polynomial था initially. You were having a separable polynomial, right? तो अभी I mean we are identifying some connection between the uh, automorphisms, between the permutation on the root set and the roots. Is that fine? आपके पास सी जो एनी परमिटेशन है, जो परमिटेशन which is permutation on the roots, which is corresponding to the automorphism. So basically we are identifying some connection between automorphisms and the roots. ठीक है? Is that fine? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let's see. You have x cube minus 2, an example. This is over q. So you already know that the minimal splitting field for this is S3, up to isomorphism. So you know q 2 to the power 1 by 3 omega is the minimal splitting field over q, and where omega is cube root of unity. And you already know that its degree is 6. We have seen already several times. So that means कि जो गलवा ग्रुप का डिग्री भी 6 ही होना चाहिए, ऑर्डर भी 6 होना चाहिए. So this should be the order of the Galwa group. Sorry. Right? तो अब अगर वो मैप आप कंसिडर करने जाओगे क्योंकि यू हैव अ डिग्री 3 पॉलिनोमियल, तो s क्या हो गया 2 to the power 1 by 3, 2 to the power 1 by 3 omega, 2 to the power 1 by 3 omega square. तो एस एन एस क्या हो गया S3 के आइसोमॉर्फिक.
परमुटेशन ग्रुप। तो बट देन यू नो के द ऑटोमॉर्फिज्म, ये जो पीछे वाला जो मैप कंसीडर करो आप, फ्रॉम गेल्वर ग्रुप ऑफ क्यू, इसको जी बोल देते हैं, जी बोल रखा नहीं बोला, चलो कोई बात नहीं। 2 to the power 1/3 ओमेगा ओवर क्यू टू एस एन एस। तो भाई पीछे वाला मैप कंसीडर करोगे तो ये मैप नेचुरली यहाँ पे ये 1 1 आई मीन ऑन टू आ जाएगा। वाई इट इज बिकॉज यू नो कि इसका ऑर्डर 6 है, S3 का ऑर्डर 6 है, इसका भी ऑर्डर 6 है, और मैप 1 1 है। also as phi is 1 1 and इन दोनों का ऑर्डर सेम है। ये n की जगह यहाँ पे 3 हो गया अब तो, राइट। दिस इज S3, दिस इज ऑल्सो S3। तो दोनों को यू हैव a 1 1 मैप on a group of order 6 to another group of order 6, तो ऑन टू हो गया। phi is on to, तो यहाँ पे ये आपको आइसोमॉर्फिज्म मिल रहा है। इन जनरल जरूरी नहीं है कि आइसोमॉर्फिज्म मिले, क्योंकि मैप जरूरी नहीं है कि ऑन टू हो। ऑल राइट, ओके, so let's see some definition of group action, though I think you may be aware with your undergrad classes. So a group G is said to act on a set A if there is a map, simply function, map means function, if there is a map from G cross A to A और ये फंक्शन सेटिस्फाई करे, सो इफ यू विश इसको कुछ नाम भी दे सकते हो एज यू विश, सपोज लेट्स से फाई है, satisfying number one, you have an element, let's say G, from the group G, and then you have the element, let's say A, from A. So and then you have, so this is an element in A, phi G A, right, because it's a function. Then you have, let's say, another element G2, तो ये G2 कहाँ है, एलिमेंट है G में, phi G1 of A, it's an element in A, इस पे phi अप्लाई कर दो, इस पे phi अप्लाई किया, this should be equal to phi
G1 G2 कॉमा ए। तो दोनों में डिफरेंस समझे। यहाँ पे राइट साइड में G1 G2 जी में एलिमेंट है एंड देन ए में एलिमेंट है, तो ये टपल यहाँ पे है, G1 G2 यहाँ पे जी में और ए यहाँ पे। तो इसके जो इमेज है इस टपल की, this is exactly same as you first find the image corresponding to the tuple G1 comma a. So this will be an element in a, then find the image of G2 comma this tuple, right? So that's first thing. Number two, because you know you have an element group है, तो group में एक वो identity element भी होता है, right? So phi of e comma a, it should be a for all a in the set A where E is the identity element in G. So any function from G cross A to A satisfying these two properties is called a group action of the group G on A. Action of the group G on a set A. तो यहाँ पे G क्या है, ग्रुप है, A क्या है, सेट है. G is a group, A is a set. Any function from G cross A to A satisfying one to we call a group action. जैसे अभी आप if you wish, I mean what the kind of group action which I am going to use, fx आपका separable polynomial था over k alpha 1 alpha 2 alpha n by root set, call it as roots of fx, or k which is, sorry, k alpha 1 alpha 2 alpha n, it is the, let's call it E, which is the minimal splitting field of fx over k. So you consider G to be the गलवा ग्रुप. तो ये जो G है इसको गलवा ग्रुप कंसिडर करते हैं, E ओवर के, राइट. जो यहाँ पे ग्रुप एक्शन में सेट है ए, एनी सेट, उसको मैं रूट सेट ले रहा हूँ. तो G क्रॉस S से S में फंक्शन चाहिए. फर्स्ट थिंग, व्हाट इज दैट? फाई ऑफ जी, सिग्मा, सिग्मा इज ए की ऑटोमॉर्फिज्म वाली है, एलिमेंट है जी में. अल्फा आई रूट है, दैट मीन्स एलिमेंट है एस में. मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ सिग्मा अल्फा आई. आई नो कि जो है रूट अंडर एन ऑटोमॉर्फिज्म रूट पे ही जाएगा, तो ये सिग्मा अल्फा आई भी एस में ही है, राइट. तो एटलीस्ट दिस फाई सो फार इज ए फंक्शन फ्रॉम जी क्रॉस एस टू एस. इट्स ए फंक्शन, राइट. नाउ डज दिस फंक्शन सेटिस्फाई द टू प्रॉपर्टीज 1 एंड 2? अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो ये ग्रुप एक्शन हो गया, एक्शन ऑफ द गलवा ग्रुप ऑन द रूट सेट, राइट. तो दूसरी प्रॉपर्टी तो इट्स क्वाइट नेचुरल टू सेटिस्फाई. इट्स क्वाइट नेचुरल टू सी दैट ये दूसरी प्रॉपर्टी तो इमीडिएटली सेटिस्फाई कर रहा है, इज इट नॉट? क्योंकि जी में मैप क्या है, फाई सेटिस्फाइज टू एस. आइडेंटिटी मैप क्या है, जो आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म. तो phi I alpha I, this is basically I of alpha I and it has to be because identity map है तो alpha I हो गया for all I. So it satisfies 2. What about 1? So let's say sigma 1, sigma 2 belongs to G, then phi sigma 1
phi sigma 2 of alpha I. ठीक है? Now this is same as sigma 1, then phi of sigma 2 alpha I is sigma 2 alpha I. That's how we are defining phi. And then this will be sigma 1 of sigma 2 alpha I. Is that fine? And this is exactly same as phi of sigma 1 composition with sigma 2 comma alpha I. तो phi 1 को भी satisfy करता है. So thus phi defines an action of Galwa group E over K on S. So this group action we will study. Is that fine? So one more definition on this group action. A group G is said to act. So said to act means by group action. Said to act on a set A transitively. That means the group action is transitive. If for any A B in A there is an element G in G such that कि phi G A B मिल जाए. If this property holds for any AB in the set A, then the group action is said to be transitive. Is that fine? So the next theorem will give you an equivalent condition for the action of Galwa group on the root set to be transitive. Separable polynomial over a field K, then this polynomial is irreducible. This is if and only if the group of F. So when I'm saying group of F, I mean Galwa group. Group of Fx acts transitively on the roots. So I think it's better to write. ब्रैकेट में लिख देता हूँ. Group of Fx means that is the Galwa group of Fx. Acts transitively on the roots.
इज दैट फाइन? गॉट दिस स्टेटमेंट? तो ये जो गलवा ग्रुप है रूट सेट पे ट्रांजिटिवली एक्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ द पॉलिनोमियल इज irreducible. Okay, so let's see the proof. Let's S call it alpha 1, alpha 2, alpha n root set of fx. So E, which is k alpha 1, alpha 2, alpha n, you know it will be the minimal splitting field of fx over k. The G be the Galwa group. All right, and you know how G acts on the S root set, you know this. So first suppose fx is irreducible. Irreducible over k. So what you want? You want the action of G on S is transitive. तो action of G on S transitive कब होगा? Action है क्या G का S पे? G cross S to S. You have any automorphism sigma, any root alpha I, it will simply go to sigma alpha I. This is the action of G on S. Action transitive तब होगा जब for any alpha I, alpha j in S, there is a automorphism sigma alpha I जाए alpha j पे. That means sigma alpha I क्या है? Sigma of alpha I. So that means for any pair alpha I, alpha j in S, if you have a automorphism which maps one to the other, then the action will be transitive, right? So that's what we want. So start with any pair of roots. So let's say alpha I and alpha j belongs to S. So then you know k alpha I will be isomorphic to k alpha j because alpha I and alpha j are the roots of the same irreducible polynomial. Is that fine? Yes, sir. As alpha I, alpha j are the roots of an irreducible polynomial fx over k. तो k अल्फा ये आइसोमॉर्फिक हो गया k अल्फा j के. नाउ व्हाट यू डू कि k सिटिंग इनसाइड k अल्फा i आइसोमॉर्फिक है k अल्फा j के. इसको कुछ नाम दे देते हैं इस आइसोमॉर्फिज्म को. लेट्स कॉल इट व्हाट यू वांट टू कॉल साई. इसको साई बोल देते हैं. तो ये जो फंक्शन है यहाँ से यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म साई है. k alpha j contained in E, the minimal splitting field of fx over k, or E over k is a normal extension. तो वही आई मीन और ये टावर ऑफ फाइनाइट एक्सटेंशन है.
K contained in K alpha I contained in E, it's a tower of finite extension. तो एक कॉरलरी किया था ना आपने सेक्शन 7.2 में कि any K home from K alpha I to E can be extended to a K automorphism on E. It is, I guess, corollary 7.2.5. So by corollary, I think it is 7.2.5 if I am correct. The psi can be extended to a K automorphism, say sigma on E. तो सिग्मा के ऑटोमॉर्फिज्म है E पे, तो वेयर इज सिग्मा? सिग्मा विल बी इन G. Is that fine? And what is sigma alpha I? Sigma is extending psi, so sigma alpha I, psi alpha I. What is psi alpha I? ये जो आइसोमॉर्फिज्म है इसमें रूट तो अल्फा आई तो अल्फा जे पे जाता था, राइट? सो psi alpha I is alpha j. So finally you have obtained a automorphism which maps alpha I to alpha j. That means because alpha I alpha j are arbitrary, so this means G acts on S transitively. All right, so I will take 5 more minutes. Is that fine? I think आपका break है, right? Class तो नहीं है. Yes, sir. Okay. So conversely, suppose that G acts on S transitively. Okay. So now what I want? I want to prove the irreducibility of fx. All right. So what you do? Let's say px be the MMP of alpha 1 over k. Because alpha 1 is an algebraic element, it satisfies fx over k. So it's an algebraic element. So algebraic hai, so you can talk about the MMP as well. So px is the MMP of alpha 1 over k. So px is the least degree polynomial satisfied by alpha 1 over k, and fx is one polynomial satisfied by alpha 1 over k. So px will divide fx in kx. This division will take place in kx. All right. So what is happening? Because you said that action is transitive, G acts on S transitively. That means for any alpha I in S, there is a automorphism in G which will map alpha 1 to alpha I, right? Also, as the action of G on S is transitive, so there exists sigma in G such that sigma of alpha 1 equals alpha I.
and this is happening for all I equals 1 to n. That means what? For I equal 1, that means alpha 1, there is a sigma, तो वो alpha 1 के लिए क्या होगा? I mean, it's the identity automorphism. For I equal to, I mean, there may be other automorphism as well, which maps alpha 1 to alpha 1, right? For I equal to, there is a automorphism. Let's call whatever it is, maybe let's तो ऐसा करते हैं, इसको I बोल देते हैं. एक ऑटोमॉर्फिज्म ऐसा मिलेगा आपको सिग्मा आई जी में, फॉर विच सिग्मा आई अल्फा 1 is alpha I, right? Is that fine? This is because the action is transitive. So this means what? You have uh, p alpha 1, so ये जीरो है, राइट? अब इस पे आप अप्लाई करो सिग्मा आई p alpha 1, तो राइट साइड तो जीरो हो गया, सिग्मा आई ऑफ जीरो विच इज जीरो. लेफ्ट साइड दिस इज p, बिकॉज कॉफिशिएंट तो आ रहे हैं k से, एम एम पी है k के ऊपर, तो कॉफिशिएंट पी एक्स एम एम पी है k के ऊपर, तो कॉफिशिएंट आ रहे हैं k से, सिग्मा आई g में है, तो फिक्सिंग द एलिमेंट्स ऑफ k, so this will be sigma I p alpha 1, this is p sigma I alpha 1, this is same as p alpha I, and nothing special in I, this you can do it for all I. So what's the conclusion? कि अल्फा 1 भी पी अल्फा 1 तो रूट है ही खैर पी एक्स का, अल्फा 2 भी रूट है, अल्फा 3 भी रूट है, अल्फा n भी रूट है. Is that fine? This means every element of S is a root of px, or that is every root of fx is a root of px. तो दैट मीन्स कि fx px को डिवाइड करेगा, और px तो पहले से ही डिवाइड करा था, तो आपस में दोनों बराबर ही हो गए. Is that fine? बट द पॉइंट इज कि px तो इरेड्यूसिबल था k के ऊपर, तो fx भी इरेड्यूसिबल हो गया. That's what we were looking for. So if you have any doubt, you can ask me now.